हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हमारे पास रिजर्वायर होता है. दिस इज द रिजर्वायर. दिस इज द हेडवर्क्स है. स्पिलवे है हमारा. यहाँ पे सर्ज चैम्बर हमारे पास रहता है, सर्ज चैम्बर. और यहाँ पे वॉल हाउस है. दिस इज कॉल्ड द पेन स्टॉक. वाटर हमारे पास रिलीज होता है इससे. और यहाँ पे पावर हाउस है. यहाँ पे आपका टरबाइन होती है और ये टरबाइन क्या करेगी, यहाँ रोटेट करती है और पावर हाउस से सीधा डायरेक्ट जो हमारे पास अल्टरनेटर होता है कपलिंग होती है और वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट हो जाता है. और ये हमारी चीज कहलाती है टेल रेस कहलाती है. दिस इज द टिपिकल लेआउट फॉर स्टोरेज टाइप हाइड्रो पावर प्लांट. Hydroelectric stations are designed mostly as multi-purpose projects such as river flood control, storage of irrigation and drinking water at navigation purpose के लिए हम use करते हैं. The vertical difference between the upper reservoir and tail race is called the head. Hydro power plant of different types such as run of river, use of water as pondage, medium head types and the reservoir high head type. Different types of turbines such as Pelton, Francis and Kaplan are used for storage, pondage and run of river plant respectively. Hydroelectric plants are capable of starting quickly. Means जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग क्विकली ऑलमोस्ट in 5 minutes. The rate of taking up load on the machines is of order 20 megawatt per minute. No losses are incurred at standstill. Thus, hydro power plant are ideal for 981 rho WH. W is the discharge meter cube per second through turbine. Rho is the density 1000 kg per meter square. H is the head. Problem peculiar to hydro plant which inhibit expansion or silting. The first is the silting. Reportedly, Bhakra dead storage has silted fully in 30 years. तो सबसे बड़ा है कि इसमें सिल्ट की प्रॉब्लम आती है. सीपेज रहता है आपका, धीरे धीरे सीपेज रहता ही रहता है. इकोलॉजिकल डैमेज टू द रीजन है आपका. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस फ्रॉम एरिया बिहाइंड द डैम विच विल फिल अप एंड बिकम अ लेक. These cannot provide base load, must be used for peak saving. ये बेस लोड नहीं प्रोवाइड करता, ये पीक शेविंग्स के लिए यूज किया जाता है. एंड एनर्जी सेविंग इन कोऑर्डिनेशन विथ थर्मल प्लांट्स. इन इंडिया लेस देन 1 megawatt micro mini is installed less than 1 to 5 megawatt and small less than 15 megawatt. Hydel plant about 5000 megawatt in Himalaya region, Himachal, UP, Uttarakhand and Jammu Kashmir. The nuclear power plant for the India present only 3% of total power generation with nuclear station at Tarapur, Maharashtra, Kota, Rajasthan, Kalpakkam, Tamil Nadu, Narora, UP and Kakarapar, Gujarat are the अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करेंगे हम. व्हेन यूरेनियम 235 is bombarded with neutron fission reactions take place releasing the neutrons and heat energy. These neutrons then participate in the chain reaction of fission. More atoms of 235 in order that the freshly released neutron be able to fission the uranium atom, their speed must be reduced to a critical value.
This is your schematic diagram. This is the control rod. This is the reactor overall. This is the moderator. This is the control rod. This is the portion, the control rod. Fuel rod is this. This is the fuel rod. This is the coolant goes to, and this is the heat exchanger medium. This is the heat exchanger medium, and the steam is generated here फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन. टरबाइन के पास क्या जाएगी, स्टीम आपकी जाएगी हाई प्रेशर की, रोटेट होगा आपका टरबाइन. टरबाइन रोटेट हुआ तो सैफ्ट रोटेट होगी टरबाइन के साथ में कनेक्टेड जनरेटर की, अल्टरनेटर की, और यहाँ से हमारे पास सप्लाई आपकी पावर की मिल जाएगी. और आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेप अप करोगे और ये भेज दोगे टू द लोड. और यहाँ पे जो डाउन हो जाएगी स्पीड आपकी स्टीम की और थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसे वाटर इनटेक रखेंगे वापस से इसमें, और ये हमारा वर्किंग स्टार्ट रहेगा. सिमेटिक व्यू ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये तो हो गया. इसमें रिएक्टर्स होते हैं कुछ टाइप्स के. द कांडू रिएक्टर, यूरेनियम in oxide form, pressurized heavy water moderated is operated in India. ये कोर होता है इसमें और ये कूलेंट साथ में होता है उसके, और फिर हमारा कंटामिनेंट होता है. 3 सेक्शंस होते हैं कांडू रिएक्टर्स के. मेरिट्स क्या क्या होती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टोटली फ्री ऑफ एयर पोल्यूशन, रिक्वायर लिटिल फ्यूल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वेट, therefore poses no transportation problem and may be sited independently on the nuclear supplies close to load centers. However, safety considerations require that they be normally located away from the populated areas. Demerits क्या क्या है इसकी? Nuclear reactor provides radioactive fuel waste, the disposal of which poses serious environmental hazards. The rate of nuclear reactions can be lowered only by a small margin, so that the load on a nuclear power plant can only be permitted to marginally reduced below its load value. The greatest danger in a fission reactor is in the case of loss of coolant is an accident. This is a error. And this is the discussion of non-conventional or renewable energy. As limited availability of coal, there is a considerable international efforts into development alternative new non-conventional renewable clean source of energy. Most of the new sources of energy, example solar energy, wind, sea waves, ocean thermal energy conversion, etc. In this section, like wind power, since 1940 we are using, मतलब हम 1900. Methods have also been found to generate constant frequency power with varying speed and consequently varying speeds of wind mills propellers. Wind power may prove practical for small power needs in isolated sites, but for maximum flexibility it should be used in conjunction with other methods of power generations to ensure continuity. For wind power generation, there are 3 types of operations. Small, this is the 0.5 to 10 kilowatt for isolated single premises, और जो सेकेंड है वो मीडियम है हमारा 10 to 100 किलोवाट फॉर कम्युनिटीज है हमारा. थर्ड है लार्ज 1.5 मेगावाट फॉर कनेक्शंस टू ग्रिड. The theoretical power
in a wind steam is given by P is equal to 0.5 rho A VQ. Rho is equal to density of air 1201 gram per meter cube at NTV, natural temperature pressure. V is the mean air velocity meter per second and A is the swept area, मीटर स्क्वायर में है swept area. For rotor of 17 मीटर, ध्यान देखिएगा 17 मीटर के लिए डायामीटर के लिए velocity of 48 kilometer per hour, the theoretical power is 265 kilowatt and the practical would roughly half of this value. There are same distinguished energy induced features of wind power systems. Most wind power sites are in remote rural island or marine areas. Rural grid systems are likely to be weak in these areas since they carry relatively low voltage supplies like 33 kV. There are always period without wind. कभी कभी हमारे पास होता है बिना विंड का भी रहता है. और next is the solar energy. What is the solar energy? The average incident solar energy received on the earth's surface is about 600 watt per meter square, but the actual value varies considerably. It has the advantage of being free of cost, non-exhaustible and completely pollution free. On the other hand, it had several drawbacks. Energy density per unit area is very low. It is available for only a part of the day. The cloudy and hazy atmosphere conditions greatly reduce the energy received. Therefore, harnessing solar energy for electricity generation challenging technological problem is the most important being that the collection and concentration of solar energy and its conversion to the electric form through the efficient and comparatively economic means. सोलर पावर पोटेंशियल, जो सोलर पावर की जो पोटेंशियल है आपकी अनलिमिटेड है. हाउएवर टोटल कैपेसिटी इज अबाउट, कितनी कैपेसिटी है आपकी 2000 मेगावाट इज बीइंग प्लान्ड. टोटल सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया इज 5 into 10 to power 15 kilowatt hour per year up to 31 December 2000. 462,000 solar cooker 55 into 10 to power 4 meter square solar thermal system collectors. For this, technology converts the solar energy to the electric form by means silicon wafer photoelectric cells known as solar cell. Their theoretical efficiency is about 25%. इसकी जो efficiency है 25% है. But the practical value is only about 15%. But that does not matter as solar energy is basically free of cost. The chief problem is the cost and maintenance होती है इसकी जो chief problem है. Solar cell with the likelihood of the breakthrough is occupy 1.5% in 1975, assuming 10% efficiency and a delay is insolation of 4 kilowatt hour per meter square. अब जो सेकेंड पोर्शन है यूनिट फर्स्ट का पावर सिस्टम का, वो यूनिट फर्स्ट का जो सेकेंड पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे. थैंक यू.